दोस्तों वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल टैक्स अपडेट पी सी मोहित कुमार। टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अपडेट आ रहा है, ये हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मुद्दे पे क्या कहा गया है, ये हम अपनी वीडियो में देखने जा रहे हैं। Furnish data on GST notices and arrest, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सेंटर को कि वो जीएसटी नोटिस और अरेस्ट से संबंधित डेटा को फर्निश करे। सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट जीएसटी नोटिस अरेस्ट data to prevent harassment and address ambiguity in section 69 powers. Bench analyzing 281 petition highlighting misuse concerns and stresses the need for adjudication to prevent the citizen harassment. The Supreme Court has asked Centre to furnish details of issuance of notices and arrests done under the provision of Goods and Service Tax Act, saying it may interrupt the law and lay down the appropriate guidelines to avoid any harassment of citizens by depriving their liberty. A special bench of Justice Sanjeev Khanna, M. Sundaresh, and Bela M. Trivedi, which is hearing a batch of 281 petitions challenging various provisions of the GST Act, Custom Act, and provision of PMLA, voiced concern over the ambiguity in section 69 of GST Act that deal with the power of arrest. हम आगे पढ़ते हैं। The bench said it would interpret the law to strengthen the liberty if need be, but not allow citizens to be harassed. You furnish the data on notices issued and arrests made under the GST Act for alleged defaults of rupees 1 crore to 5 crore respectively for the past 3 years. There can be harassment of people and we won't permit that. If we find there is a ambiguity in the provision, we will set it right. Second, people cannot be sent behind bars in all the cases. The bench told Additional Solicitor General S.V. Raju appearing for center. The bench sought the data after senior advocate Siddharth Luthra appearing for some of the petition flagged the alleged misuse of the powers of the authorities under the GST regime, saying it is curtailing the liberty of individuals. During the hearing on Thursday, Luthra pointed out that sometimes arrests are not made, but people are harassed by issuing notices to them, threatening arrest. He highlighted that arrest under the GST Act is to be preceded by adjudication of the amount considered due and payable on the part of taxpayer. Luthra said the question which need to be considered is whether the liberty of an individual can be curtailed under Section 69 until the assessment is made and amount is quantified. Raju said he will gather data regarding notices and arrest made under the Central GST Act, but such information relating to states would be difficult to collect. The bench said we want all the data. The GST Council will have the data. If the data is available, we want it before us. The bench told Mr. Raju, adding there has to be a distinction between cases of fraud and inadvertent lapses. तो ये एक अपडेट आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा है वो मांगा है जीएसटी अरेस्ट से संबंधित और जीएसटी नोटिस के संबंधित जीएसटी डिपार्टमेंट से। तो जैसे इस केस की आगे सुनवाई होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।